Assalamu alaikum, all the beautiful people out there. Hope you are doing well. Welcome to part 2 of Generative Adversarial Networks. I hope from part 1 of GANs आपको काफी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है basics and fundamental concepts of generative adversarial network. Here in part 2, I will be guiding you through the Python implementation of GANs. And in the end of this tutorial, inshallah, you will be able to generate and train your own GAN model from scratch. So for that, I am assuming कि आपको basic understanding है Python coding की. तो हम सबसे पहले अपनी Google Colab की notebook को open करेंगे. Why am I using Google Colab? Google Colab इसलिए कि Google Colab एक cloud-based platform है. And it helps us to deal with large data sets efficiently. Efficient execution होगी हमारे कोड की. So I recommend कि आप लोग भी अपने GANs की implementation जो है उसके लिए Google Colab को use करें. So in a while हमारी notebook load हो जाएगी. I created a new notebook from Colab and let's give it a name first. So I gave it a name of GANs implementation. Okay, after giving it a name, I go to runtime and then change runtime type. You can see कि अभी हमारी runtime type जो है वो none है, so I select GPU. Why? Because GPU, it will help us to execute my code in an efficient manner. So after that, let's begin with the code. So first of all, we will be importing libraries. The first thing we do in Python coding. So here I am giving caption of import libraries. It is a good practice to write caption because it helps you in the traceability of your code. So the first library I'm going to import is import TensorFlow as TF. ठीक है, आप लोग फेमिलियर होंगे टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी से. टेंसरफ्लो की एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि हमें न्यूरल नेटवर्क के साथ डील करने में हेल्प करती है. सो एज यू नो कि गैन्स जो हमारे पास उसमें दो मॉडल जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर एंड बोथ आर बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क्स. सो व्हाट वी डू, वी इंपोर्ट आवर फर्स्ट लाइब्रेरी टेंसरफ्लो विद द एलियास TF एंड लेट्स रन दिस लाइन ऑफ कोड. इस लाइन को रन करने के लिए यू कैन इधर click on this play button or you can either use the shortcut of control enter. So in a while it will be imported and you will see a green tick mark with here. So you can see that the line has been executed successfully. So let's check the version of TensorFlow. So for checking the version, we type tf dot, not here, tf dot underscore underscore tf dot double underscore version and then double and then run it again and use हम जो version use कर रहे हैं that is 2.7. So now let's import rest of our libraries. So I import numpy as np. Right here हमें help करेगी arrays और lists और tuples के साथ deal करने में. After that I import matplotlib.pyplot as plt. It will help us to generate the graphs and plots of our data. After that I import from tensorflow.keras. I import layers. So keras क्या है? keras हमारे पास TensorFlow में एक API है that is also an open source API and it also deals with the neural net. So import from TensorFlow.keras I import layers. After that from IPython I import display package and then I import glog to deal with files and folders. Then I import my OS library. I import time to display time of execution. For that, I import my Python image library and import image.io. So why am I importing this Python image library and image.io? Because the dataset I will be using is images dataset. So enable to help for loading images, I imported Python image library and deal with the input and output of images, I imported image.io. And I simply run this and you can see that all the libraries have been imported successfully. Okay, after importing all the libraries, we will load our dataset. So dataset load करने के लिए हम लोग use करेंगे एक built-in dataset mnist from keras. mnist dataset is a database in keras API जहाँ से हम अपना एक built-in dataset है handwritten images का उसको लोड करेंगे. इसके ऊपर हम अपने GAN मॉडल को ट्रेन करेंगे and in the end our GAN model will be able to produce the same kind of handwritten images, right? So हम अपना एक real dataset import कर रहे हैं from that is built in the keras in mnist. So I import it from there. I write tf.keras.datasets.mnist.to load data. Right, this line of code हमें हमारी जो data set है उसको load दे देगी. But I need to store it somewhere. So I store the training images in train images, train labels in train labels, similarly test images in test images and test labels in test labels. Right, अब हमारा data set load हो जाएगा. हमारी training images चली जाएंगी train images में, training labels in train labels, test images के variable में और test labels चले जाएंगे test label में.
सो इसको हम लोग साथ के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ यू कैन सी कि हमारा डेटा सेट जो है वो लोड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है? ओके, आई फॉरगॉट टू गिव द कैप्शन, सो लेट्स गिव अ कैप्शन टू दिस। मैं अपना टेक्स्ट बॉक्स ऐड करती हूँ और वहां पे अपना जाके कैप्शन देती हूँ, दैट इज द लोड एंड प्रिपेयर डेटा सेट। राइट आफ्टर इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज हम अपना डेटा सेट लोड करेंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमारा डेटा सेट लोड हो चुका है, बट यू नो कि हमारा जो डेटा है वो मेसी होता है, तो हम अपने डेटा की प्री प्रोसेसिंग करते हैं उसको अपने मॉडल में फीड करने के लिए, ताकि हमारा मॉडल जो है वो एरर फ्री रिजल्ट्स दे सके। तो हम अपने मॉडल की अपने डेटा की करेंगे प्री प्रोसेसिंग, और उसके लिए हम अपने जो हमारा इमेजेस है उसकी सबसे पहले डायमेंशंस को सेट करेंगे। सो इन train images dot reshape train I give all the images and I will define a shape dimension for the images. Dot shape, give the dimensions of 28, 28, 1 and the data type as float32. तो यहाँ पे dot shape 0, right? And then run this. फिर अब जो हमारे जितने भी इमेजेस हैं ट्रेन इमेजेस के अंदर, उन सब के डायमेंशंस क्या हो गए हैं 28, 28, 1, और उनकी जो डेटा टाइप है दैट इज float32. And we can also check the current configuration of our images. So I will check it by train images. Let's check the first image. तो अब देखें जो हमारी करंट कॉन्फ़िगरेशन है हमारी फर्स्ट इमेजेस की, ये जो एरे आपको नजर आ रही है, दिस इज द configuration of the pixels of our images. So you can see हमारे पास 0 0 पॉइंट्स के अंदर कुछ है हमारे, और सम ऑफ आप देखेंगे यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर्स के साथ है 136, 253 एंड दिस ऑल रिप्रेजेंट्स द पिक्सल कलर्स, राइट? सो व्हाट वी डू, द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो इमेजेस हैं वो उनकी पिक्सल्स शुड बी इन द रेंज ऑफ -1 to 1, एंड टू डू दिस हम क्या करते हैं, ट्रेन इमेजेस अपने पिक्सल्स को सेट करने के लिए आई सब्ट्रैक्ट -127.5 एंड डिवाइडेड बाय 127.5। ये क्या करेगा, हमारी पिक्सल्स की रेंज को -1 to 1 के बीच में कर देगा। एंड आई एग्जीक्यूटेड, और अब आप देखेंगे जो हमारी पिक्सल्स की रेंज है वो -1 से लेके 1 तक के बीच में आ चुकी है, और जो डेटा टाइप है दैट इज float32। तो इसके बाद हम अपना बैच और बफर साइज डिफाइन करते हैं। आई गिव बफर साइज फॉर प्रोसेसिंग डेटा 60,000 एंड बैच साइज 256। हमारी हर आइट्रेशन में जो नंबर ऑफ सैंपल्स जाएंगे और माई ट्रेनिंग डेटा विल बी 256 सैंपल्स इन ईच आइट्रेशन। अब हम अपने डेटा को शफल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैच एंड बफर साइज। सो और उसके बाद मैं अपने रिफाइंड डेटा सेट को स्टोर कर दूंगी ट्रेन डेटा सेट के वेरिएबल में, tf डॉट डेटा डॉट डेटा सेट, और इसका एक फंक्शन है फॉर्म टेंसर स्लाइसेस। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमारी जो ट्रेन इमेजेस की एरे है उसके अंदर से हर एक इंडेक्स पे जो इमेज है उसको एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। सो आई पास हियर माय ट्रेन इमेजेस डॉट shuffle buffer size dot batch size। अब हम अपने दोनों मॉडल्स को क्रिएट करेंगे, एक जनरेटर मॉडल और एक डिस्क्रिमिनेटर मॉडल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स डिस्क्रिमिनेटर मॉडल। डिस्क्रिमिनेटर मॉडल के लिए आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन हियर जिसके अंदर लेट्स कॉल इट जनरेट डिस्क्रिमिनेटर मॉडल एंड इट विल रिटर्न अ मॉडल। ओके, मॉडल हम डिफाइन करते हैं tf dot ts dot sequential and let's say here I add 2 layers for my discriminator model. तो first layer हम add करते हैं अपने discriminator model की। The first layer I am going to add is with 128 filters and 5 kernel matrix size. 64 filters, 5 kernel matrix size. And I give this stride equals to 2 then I keep adding scene and then वो वाली input shape की dimension जो हमने ऊपर define की थी for our training images। ठीक है, you can play with all these values। आप कर्नल का साइज कोई भी रख सकते हैं, फिल्टर साइज अपनी मर्जी से दे सकते हैं, स्ट्राइड्स का साइज अपनी मर्जी से दे सकते हैं, और सेम इनपुट शेप का भी साइज आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। 28, 28। अब हम अपना एक्टिवेशन फंक्शन इसके अंदर ऐड करेंगे, मॉडल्स डॉट ऐड लेयर्स डॉट लीकी वैल्यू। फिर लीकी वैल्यू क्या करेगा, ये हमारी जो इनपुट वैल्यूज जो वेट कैलकुलेट हो रहा है उसको नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये इंश्योर करेगा, और बाय डिफॉल्ट ये उनकी वैल्यूज को 0 सेट कर देगा। एंड आफ्टर दैट मैं अपने ड्रॉप आउट डिफाइन करूंगी टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग। सो मॉडल डॉट ऐड लेयर्स डॉट ड्रॉप आउट, लेट्स से आई से 3%, 0.3। Now we will repeat the same configuration for my next layer except for कि यहाँ पे फिल्टर का साइज 64 की जगह अब क्या हो जाएगा 128। रेस्ट सब कुछ सेम रहेगा। अब अपनी लास्ट 2 लेयर्स ऐड करते हैं। फर्स्ट लेयर है हमारी मॉडल डॉट ऐड फ्लैटन लेयर। ठीक है, फ्लैटन लेयर क्या करेगी कि हमारे पास इमेजेस जो है वो मल्टीपल डायमेंशन होंगी और ये एक सिंगल डायमेंशन एरे सारी इनपुट लेयर से
आने वाली इनपुट्स की एक सिंगल डायमेंशन एरे बना देगी. सो मॉडल डॉट एड लेयर्स डॉट flatten एंड द नेक्स्ट लेयर इज मॉडल डॉट एड लेयर्स डॉट डेंस. ठीक है, डेंस के लिए भी आने वाली सारे इनपुट न्यूरॉन्स जो है उन सबसे इनपुट लेके हमारी लास्ट आउटपुट लेयर होती है. और ये क्योंकि हम लोग डिस्क्रिमिनेटर कर रहे हैं और ये हमें क्लासिफाई करेगी एज इनपुट और फेक, तो इसके लिए मैं 1 न्यूरॉन ही इसके अंदर पास करूंगी. सो अवर डिस्क्रिमिनेटर मॉडल का जो है ना वो बस इतना ही काम है और ये अब हमारे पास कंप्लीट हो जाए. नाउ अब हम अपना जनरेटर मॉडल करते हैं डिफाइन. तो जनरेटर मॉडल सेम होगा एज डिस्क्रिमिनेटर एक्सेप्ट फॉर कि वो रिवर्स मैनर में हम उसको डिफाइन करेंगे. जनरेटर मॉडल, राइट हियर आई give my function name generator model. It will also return a model. और मॉडल हम लोग लिखते हैं मॉडल इक्वल्स टू tf dot keras dot sequential model. Let's add our first layer for model dot add layers dot dense. और उसको हम डायमेंशन देते हैं 77256 77256 और इनपुट शेप भी डिफाइन कर देते हैं जो कि है यहाँ पे मैं अपनी नॉइस टेम के अकॉर्डिंग पास करूंगी. सो हम लोग अपनी नॉइस टेम रखेंगे क्योंकि जनरेटर मॉडल हमारा नॉइस लेता है, एक नॉइस वेक्टर लेता है और उसका साइज में आगे 100 डिफाइन कर दूंगी. मॉडल डॉट एड, हम उसके ऊपर बैच नॉर्मलाइजेशन का फंक्शन अप्लाई करेंगे वाई बिकॉज इट विल नॉर्मलाइज आवर इनपुट वेट्स टू द रेंज बिटवीन 0 to 1. फिर उसके बाद मॉडल डॉट एड हेयर्स डॉट, ठीक है. उसके बाद हम अपनी आने वाली इमेजेस को दोबारा रीशेप करेंगे क्योंकि सिंगल एरे के अंदर आ रही थी, अब हम उन्हें रीशेप करेंगे एंड वी डिफाइन द डायमेंशन और लेयर्स डॉट रीशेप टू 7 जो हमारा साइज है इमेजेस के. एंड देन आई राइट माय एल्स स्टेटमेंट इन मॉडल डॉट आउटपुट शेप हमारे पास हाइट और विड्थ क्या होनी चाहिए 7 और हमारे पास कर्नल का साइज क्या होना चाहिए 256. अब हम अपनी सेकंड लेयर की कंपोजिशन डिफाइन करते हैं. आई ऐड माय सेकंड लेयर मॉडल डॉट ऐड layers dot, it should be inside the function, right? Model dot add layers dot convolution layers and convolution to the transpose. ठीक है, ट्रांसपोज क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जनरेटर में रिवर्स मैनर में लेयर्स डिफाइन होती हैं. सो कन्वोल्यूशन टू दी ट्रांसपोज आई गिव माय फिल्टर साइज एज 128 and kernel matrix as 55. Similarly strides को 1 and I keep the padding same. ठीक है, आप इनमें से इन वैल्यूज के साथ आप लाइक यहाँ पे चेंज कर सकते हैं वैल्यूज. कर्नल मैट्रिक्स का अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज दे दें, फिल्टर साइज चेंज कर दें, स्ट्राइड मैट्रिक्स अपने अकॉर्डिंग ले लें, ऑल योर चॉइस. नाउ सिमिलरली आई विल राइट माय एग्जॉस्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे हमारा बैच साइज 256 से क्या हो जाएगा, सॉरी कर्नल साइज नंबर ऑफ कर्नल 256 से क्या हो जाएंगे 128. मॉडल डॉट एड सिमिलरली लेयर्स डॉट अपना एक्टिवेशन फंक्शन दैट इज लीकी रिलू एंड आफ्टर दैट बैच नॉर्मलाइजेशन मॉडल डॉट एड layers dot batch normalization. ठीक है, सिमिलरली सेकंड लेयर के लिए भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इसी को कॉपी करके नीचे हम पेस्ट कर देंगे एंड हियर द नंबर ऑफ कर्नल विल बी डिक्रीज टू 64. ओके, अगेन ये सेम लाइन रिपीट होंगी और यहाँ पे हम लोग अपने जो लास्ट लेयर है इसके लिए हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे वो अब लीकी रिव्यू की बजाय होगा 10h बिकॉज वी वांट कि हमारा जो आउटपुट है वो एक 0 से 1 की -1 to 1 की रेंज के अंदर आए. तो उसके लिए हम लोग अपना जो फंक्शन यूज करेंगे दैट इज एक्टिवेशन इक्वल्स टू 10h. सिमिलरली 64 ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये भी हमारे पास डबल हो जाएंगी 20. width would be 28, height 28 and then 1. If you can see कि हमारी फाइनल डायमेंशन है इमेजेस की जो हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन इनपुट शेप इज 28 1. हमारी लास्ट लेयर के अंदर हमारी ऑटोमेटिकली आते आते आउटपुट शेप क्या हो जाएगी इमेज की 28 1. एंड दैट्स इट, हमारा जनरेटर का मॉडल जो है वो डिफाइन हो गया. अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि ये डिफाइन हो जाए. अब हम अपनी जनरेटर मॉडल की फर्दर कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं. सो हियर आई कॉल माय जनरेटर मॉडल फंक्शन जनरेटर मॉडल को मैं स्टोर कर देती हूँ एक वेरिएबल में जनरेटर. उसके बाद अपना नॉइस वेक्टर डिफाइन करते हैं जो कि जाएगा जनरेटर में एज फीचर्स. सो नॉइस वेक्टर हमारे पास एरे होती है ऑफ रैंडम नंबर्स. सो हियर आई import the normal random number of arrays of number from my TensorFlow library. So tf dot random dot normal और उसको मैं रेंज देती हूँ let's say from 1 to 100. राइट, हमारे पास ये 100 इंडेक्सेस की 100 नंबर्स की एक एरे जनरेट करेगा which will pass into our generator model as noise vector. अपने जनरेटर मॉडल के अंदर हम अपना नॉइस वेक्टर सेंड करते हैं और ट्रेनिंग
अभी क्योंकि हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे, सो हम लोग वी विल कीप ट्रेनिंग एज फॉल्स। और लेट्स सी कि हमारी अभी जो जनरेटेड इमेज की करंट कॉन्फ़िगरेशन है विदाउट ट्रेनिंग वो कैसे नजर आती है। तो हम लोग उसके लिए अपना एक प्लॉट क्रिएट करते हैं। एंड फॉर डॉट आई राइट plt डॉट image show, I write the same variable generated image or 0 comma all the rows to all the columns and I say the color should be gray। ओके सॉरी, हमने इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने जनरेटर मॉडल की डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद उसको कॉल करेंगे। सो ओके, हमारे यहाँ पे एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक आ गई थी, दिस एस शुड बी कैपिटल, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा था। ओके, आफ्टर करेक्टिंग दिस लेट्स एग्जीक्यूट। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट इमेज की विदाउट ट्रेनिंग जो जनरेटर इमेज जनरेट कर रहा है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इज काइंड ऑफ लाइक दैट। कोई नंबर हमारे पास जो डायमेंशन हमने दी थी सेम उस टाइम में हमारे पास इमेज जनरेट हो गई है, बट इट्स नॉट क्लियर व्हाट इज इट, व्हाई, बिकॉज जनरेटर ट्रेनिंग हमने अभी फॉल्स की हुई है, राइट। लेट्स कॉल नाउ आवर डिस्क्रिमिनेटर मॉडल। जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, डिस्क्रिमिनेटर इज इक्वल टू नेम ऑफ द फंक्शन जनरेट डिस्क्रिमिनेटर मॉडल। और डिस्क्रिमिनेशन में कुछ डिसीजन लेना है तो हम उसके डिसीजन को भी यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं एज अ डिस्क्रिमिनेटर एंड वी टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द जनरेटेड इमेज। सो हम वो जनरेटेड इमेज यहाँ पे पास करते हैं, राइट। लेट्स सी, हम लोग देख सकते हैं कि अभी करंटली हमारा डिस्क्रिमिनेटर किस तरह से विदाउट ट्रेनिंग जो है ना आने वाली इमेजेस को लेबल कर रहा है। सो आई कैन सिंपली प्रिंट हियर द डिसीजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेटर। सो ओके, आई सॉर्ट आउट माय एरर। यहाँ पर सेम स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, सीक्वेंशियल का एस हमने कैपिटल रखना। तो अब ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस हम लोग दोबारा से अपने इसको रन करते हैं एंड यू विल सी कि हमारे पास जो डिसीजन प्रिंट हो रहा है दैट इज अभी इस हमें समझ नहीं आएगी डिसीजन की वजह, बिकॉज इट इज इन सम फ्लोट न्यूमेरिकल फॉर्म। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस तरह से देखेंगे कि जो पॉजिटिव हमारे पास नंबर रिटर्न हो रहा है इसका मतलब है हमारा डिस्क्रिमिनेटर उसको ट्रू कह रहा है इमेज को, राइट। और उसके बाद अगर हम मल्टीपल उसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। अब आप देखिए हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू जनरेट हुई है, विच मीन्स कि द इनकमिंग इमेज को डिस्क्रिमिनेटर ने एज फेक लेबल किया। लेकिन अभी हमारे पास ये दोनों ट्रेन नहीं हुए, ना जनरेटर ना डिस्क्रिमिनेटर। सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम अपने इनके लॉसेस के फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसकी बेसिस पे हमारा जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर दोनों फीड होंगे और अपनी इम्प्रूवमेंट करेंगे। So here I give the caption of define loss functions for generator and discriminator. So first of all define discriminator loss और यहाँ पे है दो arrays पास करेंगे, one for real output and the other for fake output. Now real loss, so real loss calculate करेंगे हम, real loss अपना cross entropy का function call करेंगे, cross entropy and the real loss किस चीज के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, हमारा real loss कैलकुलेट हो रहा है हमारे रियल आउटपुट के ऊपर। So I will write here tf dot one like I pass my real output and the second parameter also as real output. Alright, discriminator हमारा मॉडल जो है हमारे पास दो इनपुट्स ले रहा होता है, as you know, one from the as real data set images और एक हमारे पास जनरेटेड इमेजेस होती हैं फ्रॉम जनरेटर। ठीक है, जो रियल हमारे पास आ रही हैं उसको हम रियल आउटपुट के अंदर स्टोर करेंगे, जो रियल इमेजेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेटर क्लासिफाई कर रहा है उसको हम स्टोर करेंगे रियल आउटपुट के एरे में। और वो वाली जनरेटर का डिस्क्रिमिनेटर का सॉरी डिस्क्रिमिनेटर की वो वाली आउटपुट जो वो फेक इमेजेस के ऊपर दे रहा है, जो जनरेटर्स आ रही हैं उसको हम स्टोर कर रहे हैं अपनी फेक आउटपुट के इमेजेस में। सो इन रियल लॉस हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रियल लॉस के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं जस्ट अ मिनट। ओके, रियल लॉस के अंदर हम अपना कैलकुलेट कर रहे हैं वो वाला लॉस जो डिस्क्रिमिनेटर ने रियल इमेजेस के ऊपर किया है। फॉर एग्जांपल उसने किसी रियल इमेज को फेक कर, तो कितनी इमेजेस थी, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने 10 जनरेटर को हमने अपने डिस्क्रिमिनेटर को 10 इमेजेस दी फ्रॉम रियल, जिसमें से उसने 4 को फॉर एग्जांपल कहा कि ये फेक है जबकि वो 10 की 10 रियल थी। तो इसकी बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रिमिनेटर का रियल लॉस और उसकी क्रॉस एंट्रोपी कैलकुलेट करके हम लोग स्टोर कर रहे हैं अपने रियल लॉस के अंदर। सिमिलरली हम उसका फेक लॉस कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेक आउटपुट कि उसने जनरेटर से आने वाली कितनी इमेजेस को रियल बोला है। सो फेक लॉस इक्वल्स टू, here I go with the zeros, like why, because we are representing real with 1 and fake with zeros। और यहाँ पे क्या आ जाएगी fake output। Now here we define our cross entropy। So the cross entropy equals to, simply import the built-in cross binary function, so tf dot kras dot losses binary cross entropy, and after that हम अपने इन दोनों को execute कर लेते हैं। So ये execute हो गए हैं successfully। After that the next thing we are going to do is to define generator loss। After the discriminator loss we are going to define
our generator loss. तो generator loss किसकी बेसिस पे कैलकुलेट होगा? generator loss कैलकुलेट होगा फेक आउटपुट की बेस पे। फेक आउटपुट की बेस पे वाई? बिकॉज जनरेटर की कितनी इमेजेस को डिस्क्रिमिनेटर ने फेक आउटपुट कहा है, तो इसका मतलब है कि जनरेटर हमारा सक्सेसफुली डिस्क्रिमिनेटर को फूल नहीं कर सका, तो हम उस बेसिस पे अपने जनरेटर का लॉस कैलकुलेट करेंगे एंड इट विल रिटर्न दिस क्रॉस एंट्रोपी ऑफ जीरो टाइप फंक्शन दैट्स एग्जीक्यूटेड। ऑलराइट, अब हमारा डिस्क्रिमिनेटर का लॉस कैलकुलेट हो गया, जनरेटर का लॉस कैलकुलेट हो गया, तो उसके बाद हम अपने जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर ऑप्टिमाइजर्स को डिफाइन करेंगे। ऑप्टिमाइजर्स टू चूज बेस्ट जनरेटर मॉडल एंड बेस्ट discriminator model. So here I add my caption text box or define optimizers. So the discriminator optimizer is equal to built-in optimizers हम लोग कॉल करेंगे from tf.keras.optimizers। हमारा optimizers है Adam with हम उसको learning rate देते हैं 1e-4 and generator optimizer equal to I'll copy the same line and execute it. फिर after defining optimizers अब हमें अपना training view define करना है कि हमारे कितने, यहाँ पे हम लोग पहले कैप्शन डाल देते हैं वी आर डिफाइनिंग द ट्रेनिंग व्यू, कि हम कितनी ट्रेनिंग के अंदर अपने जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं। सो here we are going to define our training view. Right, I add the code sir. So here I give my epochs equals to 50. Epochs are number of iterations. My noise dim that I already defined ऊपर as 1 to 100, तो यहाँ पे हम उसे एक रेंज की बजाय सिंपल एक इंटीजर दे देते हैं 100 का। And then number of examples to generate. Number of examples to generate. For example, I want 16 images for 4 rows and 4 columns. Right? You can give it upon your choice. आप number of iterations भी change करते हैं, जितनी number of iterations ज्यादा होंगी, जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी हमारे मॉडल, उतना ही अच्छी आउटपुट देगा। नॉइज टिम भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं एंड दिस नंबर ऑफ एग्जांपल्स टू जनरेट इट्स ऑल योर चॉइस। अब यहाँ पे हम अपने सीड के वेरिएबल के अंदर दोनों अपने नंबर ऑफ वेक्टर और नंबर ऑफ एग्जांपल टू जनरेट वो दोनों पास कर देंगे कि हमारे पास 100 नॉइज टिम के साथ आपने 16 इमेजेस जनरेट करनी है and I want it normalized, so I write tf.random.normal and here I pass my number of generated images and my noise dim. So number of examples to generate my noise. After this हम एक फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर हम अपने लॉसेस और अपने जो ऑप्टिमाइजर्स हैं उन दोनों को डिफाइन करके अपने ग्रेडियंट्स डिफाइन करते हैं फॉर वन फंक्शन जिसके अंदर हमारे ये तीनों काम हो जाएंगे। सो here I define another function and let's give it a name of define train step, और उसके अंदर हम अपनी इमेजेस सेंड करेंगे ट्रेनिंग इमेजेस। तो जो हमारी नॉइस है उसके अंदर उसको हमने नॉर्मलाइज करना है, सो tf.random.normal similarly and I pass here my batch size, ठीक है, the number of images in each iteration and my noise dim vector। अब यहाँ पे हम अपने जो gradient tape है टेंसर फ्लो के अंदर उसमें से अपने जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर दोनों के लिए ग्रेडियंट टेप्स डिफाइन करेंगे बाय इंपोर्ट विद tf.gradient tape from TensorFlow as gen tape alias for generator, like gen tape, and same is equal as disk tape for discriminator. All right, generated equals to जनरेटेड इमेजेस। जनरेटर के फंक्शन में अब हम क्या पास करेंगे, अपने जनरेटर के फंक्शन में एक हमारी ब्रांच चालू होती है और दूसरा हम अब उसकी जो ट्रेनिंग है उसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, राइट। जो हमारी डिस्क्रिमिनेटर क्या दे रहा है हमें, डिस्क्रिमिनेटर एक रियल आउटपुट दे रहा है और एक हमें फेक आउटपुट दे रहा है। तो उसकी जो रियल आउटपुट है हम उसके ऊपर भी उसकी ट्रेनिंग करेंगे और फेक आउटपुट के ऊपर भी उसकी ट्रेनिंग करेंगे। सो आई राइट रियल आउटपुट इक्वल्स टू कॉल माई डिस्क्रिमिनेटर फंक्शन, जहाँ पे हमने अपना डिस्क्रिमिनेटर डिफाइन किया था। आई पास the images and training को क्या कर देंगे, true। and similarly हमारे पास कितने images को discriminator ने fake है उसके ऊपर भी हम अपने discriminator को train करेंगे। now define generator and discriminator loss। तो generator loss equals to generator loss में जो हमने ऊपर function बनाया था उसके अंदर हम अपना fake output pass कर देंगे। तो generator loss equals to fake output and the discriminator loss is equal to discriminator real output and the fake output both। so here we define our generator and discriminator gradients। So I write gradient for generator, so gradient for generator equals to जो हमने ऊपर उसका ये वाला import किया था with tf gradient, तो हम उसका वो लिखेंगे alias as gradient function। और gradient किस basis पे compute होगा, on the basis of generator loss and the trainable variables। So I pass my first parameter as generator loss and then generator dot the trainable variable, right? And after that gradient for discriminator,
So gradients of discriminator equals to display. यहाँ पे हमारा पास होगा first the discriminator loss and then again discriminator dot variable variables. Okay, अब हम यहाँ पे अपने इन optimizers को apply करना है. So generator optimizers dot apply gradients. So I will here two things. What gradients of generator, of course, right? Gradients of generator. Okay, जो यहाँ पे हमने define किया generator loss और generator dot variable variables cost. So gradients of generator and my second parameter will be the generator dot trainable variable. ठीक है, इनके ऊपर अब ये optimizers apply हो जाएंगे. Similarly मैं अपना generator के बाद discriminator के ऊपर optimizer apply करूंगी. So generator मैं type discriminator यहाँ पे आ जाएगा gradients of discriminator and discriminator dot trainable variable. Okay, after defining my train step function, हम एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि हमारी जो जनरेटर इमेजेस जनरेट कर रहा है उनको सेव करेगा. सो आई गिव इट अ नेम एज जनरेट एंड सेव इमेज. दैट बिकॉज इन एवरी आइट्रेशन जनरेटर एक डिफरेंट इमेज हमें देगा. सो जो उसकी प्रीवियस इमेजेस हैं हम उसके लिए एक फंक्शन लिखते हैं कि वो सेव होती रहे. तो यहाँ पे जो हम पैरामीटर्स पास करेंगे हमारा है मॉडल या epochs which are our iterations and test input. And on the basis of that the discriminator prediction will be stored in the prediction variable. So I call here my model function as test input. और ट्रेनिंग अभी हम नहीं कर रहे, so हम ट्रेनिंग को रखेंगे false. ओके, उसके बाद जो हमारी फिगर हमें आउटपुट में शो होगी हम उसके लिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं. सो फिगर इक्वल्स टू plt डॉट फिगर. लेट्स से आई से मुझे 4x4 इमेज चाहिए. सो here text size equals to 4. So here we are defining our truth. हमें हर iteration के ऊपर discriminator का prediction चाहिए. So for I in range predictions, my predictions starting from 1. इसके लिए subplot fill करो. So write plt dot subplot with configuration 4 4 और हर बार 1 by 1 increment होता जाएगा, right? और उनको display करने के लिए I call my plt dot image show function and here predictions हम लोग define करेंगे. I will not call them because it is a 2D array. So I want all the indexes and all the rows and all the columns. 5 comma column comma C. And the number of vectors are 127.5 multiplied by 127.5 and color should be gray. And then I call my plt dot show function. Okay, after solving indentations issues, I run my function. Okay, now finally अब हम अपने train का function define करेंगे जिसे हम कॉल करेंगे तो हमारा जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर मॉडल फाइनली ट्रेन होके हमारी फाइनल आउटपुट देंगे. डिफाइन ट्रेन और यहाँ पे हमारा जाएगा डेटा सेट एंड द नंबर ऑफ आइट्रेशंस. सो फर्स्ट लूप इज फॉर एंड रेंज द नंबर ऑफ आइट्रेशंस. हम अपना टाइम जो कि डिस्प्ले होने में लगा रहा है उसको कॉल करते हैं टाइम डॉट टाइम की मेथड से एंड विल स्टोर इट इन स्टार्ट वेरिएबल एंड इनसाइड इट आवर नेस्टेड लूप फॉर image batch in dataset. तो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन में जो हमारा image batch है उस पे हम अपना कॉल करेंगे train step का फंक्शन जिसमें हमने ऊपर अपने सारे losses optimizers और gradients डिफाइन किए. so on that image batch हम अपना train step का फंक्शन कॉल करेंगे. you can see here this is our train step function and now my display function display dot clear output because in each iteration हमें नई image generate करेगा generator. सो हम पिछली वाली इमेज को क्या कहते हैं क्लियर कर देंगे. सो क्लियर डॉट क्लियर आउटपुट और यहाँ पे वेट क्या होगा ट्रू. एंड नाउ हियर आई कॉल माय जनरेट एंड सेव इमेज फंक्शन. तो पिछले आउटपुट है जनरेटर की उसको हम स्टोर कर देंगे. सो हियर आई पास माय जनरेटर मॉडल देन आइट्रेशन द इंक्रीमेंटेड वन एंड देन माय सीड. सीड यहाँ पे हमने सीड के अंदर अपने नंबर ऑफ एग्जांपल टू जनरेट और नॉइज टेम स्टोर किया था. उसके बाद आई वांट if I want कि मेरा साथ में time भी print हो so that's totally optional. आप लिख सकते हैं print time with each iteration, right? So print I give the right time for each epoch in curly brackets and this dot I format my time function with epoch plus 1 और my time dot time function और इसमें से हम लोग अपना start time minus कर देंगे. तो ये वाला time हम subtract करते जाएंगे हर iteration. Then I repeat the same lines. तो ये हमारा अब जो डिफाइन ट्रेन का फंक्शन है ये हमारा फाइनल फंक्शन अब ये डिफाइन हो चुका है. आफ्टर दैट हम अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे और हमारा जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर बोथ विल स्टार्ट ट्रेनिंग. सो लेट्स एग्जीक्यूट इट. इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम अपना फाइनल स्टेप करते हैं दैट इज कॉल द ट्रेन फंक्शन. एंड नाउ हियर आई विल बी कॉलिंग माय
ट्रेन फंक्शन, यहाँ पे हम अपना ट्रेनिंग डेटा सेट पास करेंगे और अपने नंबर ऑफ आइट्रेशन जो हमने ऊपर डिफाइन किए थे दैट वाज 50 वो पास करते हैं as default. So now let's run this. It will run up to 50 iterations. On each iteration हमें हमारी आउटपुट शो होगी कि हर आइट्रेशन में वो किस तरह से जनरेटर इमेजेस जनरेट कर रहा है. It will take ओवरऑल 10 to 15 मिनट्स विद जीपीयू अगर आप यूज कर रहे हैं, और अगर आप अपने सिस्टम के रिसोर्सेज यूज करते हैं तो इट डिपेंड्स कि वो कितना स्लो है. तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट आइट्रेशन से हमारा टाइम भी डिस्प्ले हो रहा है और हमारी फर्स्ट आइट्रेशन की जनरेटेड इमेजेस हमें 4x4 की 2D एरे की फॉर्म में डिस्प्ले हो रही हैं. सो up till 50 हमारे पास चलेंगे. It will take 10 to 15 minutes. So I will show you the final output after 10 to 15 minutes. So here our 20 iterations has been completed और आप देखें जो कितनी improved होती जा रही है every iteration the output of our GAN. So up to 50 ये और भी improve हो जाएगी. So let's wait till 50. So here you can see हमारी 50 iterations almost complete होने लगी हैं और अब आप इसकी improved output देख सकते हैं जो हमने डेटा सेट अपना दिया था हैंड रिटन इमेजेस का. सो इट्स काइंड ऑफ हमारे पास हैंड रिटन इमेजेस जनरेट हो गई हैं. सो इसकी क्वालिटी और भी बेटर हो सकती है इफ यू इंक्रीज योर नंबर ऑफ आइट्रेशंस. तो जितना ज्यादा हम अच्छा अपने मॉडल को जितना ज्यादा हम ट्रेन करेंगे उतनी अच्छी वो हमें आउटपुट जनरेट करके देगा. तो आप देख सकते हैं हमारी 50 आइट्रेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं और 50 आइट्रेशंस के बाद हमारे GAN ने ये वाली इमेजेस जनरेट की हैं जो कि काफी हद तक रिजेंबल करती हैं विद रियल हैंड रिटन images of numbers or characters. So that's it from today's tutorial. I hope you like the video. Please do like, share and subscribe. Thank you. Take care.